Welcome, my dear students, to the social science lecture. In this lecture, we are going to start with the second chapter of geography, that is, a location and extent. In this year, as we have started to study about the two countries, mainly the India and the Brazil. In the whole syllabus of your 10th standard, there is a totally comparison between of these two countries, which is one in the South America and which is one in the South Asia. So now we have to find out their location and extent. So in the video, we will continue with the part that we can easily understand with the help of creativity, that what locations and what kind of geographical extent India have and what kind of geographical extent Brazil have. In this video, we shall learn about the location and extent of two different countries. On one hand, it would be India, and on the other hand, it would be Brazil. When it comes to India, we all know this is the flag of India. On the other hand, when it comes to Brazil, we must know that this is the flag of Brazil. Again, when it comes to India, India is the second largest populated country in the world, whereas the country which ranks first in population is China. India is well known for its spices in the world, and in India, it is Kerala that is famous for spices. On the other hand, India is also famous for tea. In India, the leading tea producing states are Assam, West Bengal, and Kerala. Among sports, India is very popular for cricket. On the other hand, when it comes to Brazil, Brazil is famous for its samba dance. Brazil is very popular for its coffee. It is a leading producer of coffee in the world. So, it is known as the coffee pot of the world. Football is a very popular sport in this country. Again, coming back to India, starting with the capital. The capital of India is New Delhi. Let us have an understanding of the location, extent, and the boundaries. When it comes to the world is made up of 7 continents, and they are North America, South America, Africa, Europe, Asia, Australia, and Antarctica. And India lies in the Asian continent. It lies in the south of Central Asia. Now, when it comes to the globe, a globe can be divided into northern and southern hemisphere and western and eastern hemisphere. Equator divides the globe into northern and southern hemisphere, and India lies in the northern hemisphere. Similarly, prime meridian divides the globe into western and eastern hemisphere, and India lies in the eastern hemisphere. Now again, when it comes to the globe has some imaginary lines. The horizontal lines are known as latitudes, and the vertical lines are known as longitudes. These are very helpful in locating any country or any place on the world map. So we can say that all countries lie between 2 latitudes and 2 longitudes. When it comes to India, India lies between 8 degrees and 4 minutes north and 37 degrees 6 minutes north latitude. Now here we use the word north latitude in both the cases because entire India lies in the northern hemisphere. Similarly, the longitudinal extents are 68 degrees 7 minutes east to 97 degrees 25 minutes east. So here again we are using the word east because India entirely lies in the eastern hemisphere. Let's talk about the southernmost tip of India. Well, Indira Point is the southernmost tip of India and it is located on 6 degrees 45 minutes north. Now, India
is surrounded by Pakistan and Afghanistan towards the northwest, China, Nepal, and Bhutan towards north, Bangladesh and Myanmar towards east, Sri Lanka and Maldives towards south. India has a coastline along the Arabian Sea towards the west and Bay of Bengal towards the east. Now, on the other hand, let us understand the location, extent, and boundaries of Brazil. When it comes to Brazil, Brazil lies in South American continent. Since equator passes through the northern part of Brazil, some part of Brazil lies in the northern hemisphere while most of it lies in the southern hemisphere. It also lies in the western hemisphere and in the northern part of the South American continent. Now we must understand that Brazil lies in the northern part of South America. Again, let us understand the latitudes and longitudes of Brazil. Well, Brazil lies between 5 degrees 15 minutes north and 33 degrees 45 minutes south latitudes, and between 34 degrees 45 minutes west and 73 degrees 48 minutes west longitudes. Coming to the neighboring countries, the countries that lie to its south are Uruguay, Argentina, and Paraguay. The countries lying towards its west are Bolivia and Peru. The countries lying towards its north are Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, French Guiana. Brazil has a long coastline along the South Atlantic Ocean. Now, in the second part of this, we are going to understand the historical background of India and the historical background of Brazil. As in the first part, we have already studied about the location, extent, and the neighboring countries, which is the capital of India, which is the capital of Brazil. As I can tell you now that the capital of India is in Delhi and capital of Brazil is Brasilia. So now we are going to understand the historical background. जिसका मतलब ये है कि इंडिया कैसे एज एन कंट्री इमर्ज हुआ और इंडिया के ऊपर हिस्टोरिकल चीज़ें, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया के ऊपर किसने रूल किया, क्या क्या चीज़ें थी, उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, और इंडिया के ऊपर क्या क्या प्रेशराइज चीज़ें थी और किन चीज़ों की प्रॉब्लम इंडिया को फेस करनी पड़ी आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो. इंडिया वॉज द अंडर द ब्रिटिश रूल फॉर ऑलमोस्ट 1.5 सेंचुरी, है ना, मतलब 1.5 सेंचुरी मतलब 150 साल तक कम से कम इंडिया पे किसने रूल किया, ब्रिटिश लोग ने, इंग्लिश पीपल ने रूल किया. इंडिया गॉट इट इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947 डिस्पाइट फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स लाइक 3 वॉर्स. अभी 3 वॉर्स कौन से हैं, हमने ऑलरेडी हिस्ट्री के अंदर स्टडी किया. ये 3 वॉर्स कौन से हैं, 1965 62 पहले चाइना वॉर, 1965 का जो था आपका इंडिया पाकिस्तान वॉर, एंड 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर्स. Famine situations in various parts and similar issues after independence. India is a major developing country in the world. India is considered to be the global market too. Global market इसके लिए इंडिया को कहा जाता है क्योंकि इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड की 17% की जो पॉपुलेशन है, यानी वर्ल्ड में अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 17 लोग जो वो इंडिया में रहते हैं. इस तरीके की इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन होने के कारण इंडिया को एक ग्लोबल मार्केट के जैसा देखा जाता है. इसके लिए इंडिया ने बहुत सी पहले प्रॉब्लम भी फेस की है और आगे इंडिया के लिए मेजर डेवलपिंग फैसिलिटीज़ भी देखी जाती है. बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम इंडियन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप. मतलब क्या होता है, बहुत से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में से बहुत से चेंजेस किए गए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फ्रेम किया गया ताकि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बूस्टअप हो जाए, यानी पेस्टअप हो जाए, बहुत बड़े लेवल पे आ जाए इंडिया की इकोनॉमी. जैसे हम कहते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी 6 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन हो चुकी है, 6 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या, इकोनॉमी इज़ कंटिन्यू इन ग्रोइंग. ठीक है, नेक्स्ट वन, the proportion of youth in India, the proportion of youth in Indian population is high
and as this is some major part of the working population, India is looked upon as a young country, क्योंकि इंडिया में जो यंग पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और ओल्ड पॉपुलेशन कम है, इसके लिए इंडिया को क्या देखा जाता है, एज एन यंग कंट्री। और ये यंग पीपल अगर अच्छी तरीके से इनको एम्प्लॉयड किया जाए और इनको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए इतने बड़े ह्यूमन रिसोर्स को, तो इंडिया एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल डेवलप नेशन आगे फ्यूचर में बन सकता है। ये चीज़ें थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया। नाउ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ब्राज़ील। फॉर मोर देन 3 centuries ब्राज़ील वर अंडर द पोर्चुगीज रूल। ब्राज़ील, देखो अब इंडिया किसके रूल में था, ब्रिटिश रूल में, और ब्राज़ील किसके कंट्रोल में था, पोर्चुगीज़। आपको एक और चीज़ पता होगी, इंडिया में जो फर्स्ट पर्सन आने वाले थे जो फॉरेन थे वो कौन थे, पोर्चुगीज़ के वास्को डिगामा। कौन थे वो, वास्को डिगामा। तो इसके लिए इंडिया पे भी पोर्चुगीज़ का रूल था, लेकिन ओवरऑल इंडिया पे जो रूल था वो किसका था, ब्रिटिश पीपल का था। उसके बाद हमने एक और चीज़ स्टडी किया था कि जो लास्ट स्टेट्स जो हमने इंडिपेंडेंट किए, दमन, दीव एंड गोवा, वो किसके कंट्रोल में थे, पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में थे, बराबर। तो उस तरीके से पोर्चुगीज़ इंडिया में भी था लेकिन कुछ लिमिटेड एरियाज में से था, लेकिन ब्राज़ील में ओवरऑल जो ब्राज़ील को पूरा कंट्रोल करके जो रखा था वो किसने करके रखा था, पोर्चुगीज़ ने। अब ब्राज़ील गेन इंडिपेंडेंस इन 1822। ब्राज़ील को 1822 में मिला था इंडिपेंडेंस, और हमको कब मिला था, 1947। ऑलमोस्ट हमको 100 साल के बाद, 120 साल के बाद इंडिपेंडेंस मिला है। सो फ्रॉम 1930 टू 1985 फॉर मोर देन हाफ सेंचुरी इट वॉज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट। देखो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी वापस से एक बार 1930 से लेके 85 तक ये किसके कंट्रोल में आ गया था, मिलिट्री कंट्रोल में आ गया था। बट नाउ इट हैज़ ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट 20th century। ब्राज़ील इज सीन एज अ contributor to the economic growth of the world and important market in future। और ब्राज़ील को भी एक important future market की तरफ से देखा जाता है। और ब्राज़ील ने भी इंडिपेंडेंस से पहले भी बहुत सी प्रॉब्लम फेस की है और इंडिपेंडेंस के बाद भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस की है। तो होप माय डियर स्टूडेंट्स यू कैन easily understand what is explained in this chapter, and now in the next lecture we are going to start with the third chapter of our geography। ईयर आपको यहाँ पे एक चीज़ें जो दी गई है, कलर करके, मेक फ्रेंड विद अ मैप, ये सारे क्वेश्चंस आपके कैंसल्ड है, तो आपको इसमें से कोई भी आने वाला एग्ज़ाम में नहीं है।